Well, if the market gets cheaper, we will have many more opportunities to do intelligent things. We're going to be buying things for as long as I live. We don't spend any time thinking or talking about what the stock market is going to do because we don't know. But we are not operating on the basis of any kind of macro forecasts about stocks. If you can buy very good businesses at attractive prices, it's crazy to say, I think I'll sit this out because it might get a little cheaper next year or something of the sort, and because the world's going to go to hell. पिछले 6 महीनों में स्टॉक मार्केट के हर कोने में सेलिंग देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट लेवल पे देखें तो निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स के अलावा मोस्टली सारे मेजर इंडिसेस डबल डिजिट से गिरे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आखिरी के 6 महीनों में कुछ सेक्टोरल इंडिसेस पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि निफ्टी आईटी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। यही नहीं, कई सेक्टर्स तो ऐसे भी हैं जिनमें मोर देन 20% सेलिंग देखने को मिली है। और ये देखने के लिए कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की सिचुएशन क्या है, तो लेट्स कंसिडर निफ्टी 500 टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट ब्रेथ। निफ्टी 500 में इंडिया के लार्जेस्ट 500 स्टॉक्स हैं। तो आप ये पिक्चर देखिए, तकरीबन 415 स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी 500 में 20% से ज्यादा की गिरावट है। तो अभी तक एक चीज तो क्लियर है कि आप अकेले नहीं हो जिसके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। इन जनरल पूरा मार्केट ही करेक्ट हो रहा है। तो क्या ये करेक्शन नॉर्मल है? चलिए सुनते हैं इस पे लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच का क्या कहना है। But you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine. You're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. तो जैसा कि आपने सुना, पीटर लिंच का कहना है कि मार्केट में 10% करेक्शन नॉर्मल है और 20% और ज्यादा का करेक्शन हर 5 से 6 सालों में आता है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको इसका एडवांटेज लेकर अपने रिटर्न्स मैग्नीफाई करने चाहिए। इवन लेजेंडरी इन्वेस्टर हावर्ड मार्क्स का भी यही कहना है कि मार्केट साइकिल्स में मूव करता है और टाइम टू टाइम एक्सट्रीम स्विंग्स देखने को मिलते हैं। And our job as an investor is to benefit from those extreme swings. If you read the book, if you understand cycles, you will be able to reduce the emotional influences at that time and cut through them, and maybe we'll just say keep your wits about you. So we concluded in late 2008, after the bankruptcy of Lehman Brothers put the markets into free fall, will the financial world end or not? What we said was, it's hard to predict the end of the financial world. If you conclude that the financial world will end, it's hard to have any idea what to do. And most of the time, the financial world doesn't end. We also made a very simple calculation. Should we buy or not? Well, if we invest and the financial world ends, kind of doesn't matter. But if we don't invest and the financial world doesn't end, then we didn't do our job. You know, here we are in an environment where really people had no idea what was coming next, and we're talking about the end of the world. And I thought the analysis was rather simple, that we had to buy. So at Oaktree, we invested $650 million a week in the last 15 weeks of 2008. That's about $10 billion. And that's really all you had to do. यही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स वॉरेन बफे, जिन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11 करी थी इन शेयर्स, उनका क्या कहना है फॉलिंग मार्केट में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। The interesting thing is, obviously, we haven't the faintest idea what the stock market is going to do when it opens on Monday. We never have had. We have never made, Charlie and I don't think, in all the time we've worked together, and I'll tell you something later on maybe about how learning takes place, but we have never, I don't think we've ever made a decision where either one of us has either said or been thinking we should buy or sell based on what the market is going to do. No. Or for that matter,
on what the economy is going to do. We don't know. Wrote an article for the New York Times and Buy American and all these things. Well, if I'd had any sense of timing and waited 6 months until, I think the low was in March, and in fact, I think I was on CNBC maybe that day or something, but I totally missed that opportunity. I totally missed, in March of 2020. We have not been good at timing. We've been reasonably good. जैसे कि आपने सुना, लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी एक्सेप्ट किया कि ही ऑल्सो वेंट रॉन्ग इन 2020 और मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाए। स्टॉक मार्केट में आप कितना टाइम बिताते हो वो ज्यादा जरूरी है, इससे कि आप मार्केट टाइमिंग सही कर पाओ। इसको और अच्छे से समझते हैं। सेंसेक्स इंडिया का ओल्डेस्ट इंडेक्स है एंड एज ऑफ टुडे 76,000 की वैल्यू के ऊपर है, यानी कि 135x रिटर्न सिंस 1986। बट हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये 132x की जर्नी इजी रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। सेंसेक्स ने पिछले 39 इयर्स की जर्नी में कई बेयर मार्केट्स, फ्लैट कंसोलिडेशन पीरियड्स भी देखे हैं। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी सेंसेक्स में ऐसे पीरियड्स भी थे जहां बहुत सालों तक कोई रिटर्न्स नहीं आए। जैसे आप ये टेबल देखिए, तो जैसा आपने अभी टेबल में देखा, पिछले 39 इयर्स के पीरियड में सेंसेक्स ने 6 टाइम करेक्शन देखी है, जिसमें सबसे बड़ा पीरियड था 1992 टू 2004, यानी कि 12 साल जहां सेंसेक्स ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। बट क्या हमें इस डेटा से डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सेंसेक्स ने ऐसे टाइम करेक्शन के बाद भी इन द लास्ट 39 इयर्स इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किए हैं 13.34% के CAGR से। और मार्केट करेक्शन पर मार्केट वेटरन समीर अरोड़ा का भी कहना है कि शॉर्ट पीरियड में अगर हम अंडर परफॉर्म करें तो उसे नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। ऐसे कंसोलिडेशन के पीरियड में ही जब आप SIP कंटिन्यू करते हो, तो जब भी मार्केट रैली होगा तब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। But if the world is in a crisis or in a bad shape, then everybody becomes a financial investor, and that becomes the connection between different markets, that there are financial common investors, or even if you're not a common investor, you can look at the other market and feel bad. Therefore, I never prayed for China collapse and things like that, which people were praying, 2-3 years ago or 2 years ago, that if it collapses, we may outperform, but we can't make money. Right now, it's going a little bit off because I think the world is good, everything is good. But somehow India doesn't seem to be performing. But that I will still go with this global macro, that if the world is positive and strongly positive, we can underperform, and sometimes we should, but we don't have to be negative. इसके अलावा लेजेंडरी इन्वेस्टर चार्ली मंगर का मार्केट क्रैश को लेकर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। In fact, you can argue that if you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50% 2 or 3 times a century, you're not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result you're going to get. जैसा कि हमने सुना, मार्केट में बिहेवियर है कि आपकी सबसे बड़ी एज है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी। एज एन इन्वेस्टर आपके लाइफ स्पैन में 3 से 4 बड़े क्रैशेस आएंगे, जैसे कि 2002 IT बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 कोविड। ऐसे टाइम पर आपको शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी अवॉइड करके लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। यही नहीं, चलिए सुनते हैं वेटरन इन्वेस्टर विजय केडिया का क्या कहना है मार्केट रिसर्च को लेकर। आप कोई भी ऐसा सेक्टर चुनिए जिस सेक्टर में ग्रोथ होने वाली हो, उसकी कोई भी अगर अच्छी कंपनी को अगर आप पकड़ लेंगे तो बड़ा सिंपल आपको पैसा देकर जाने वाला है। उसमें ये मत सोचो कि छोटे दाम का शेयर्स लूं या कोई मैं जो अननोन कंपनी का जो शेयर्स है उसको मैं ले लूं कि मासा ने बोला है या भैया ने बोला है या साले ने बोला है। वो काम शेयर बाजार में मत करना, क्योंकि आप अगर बाजार में एक मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो भी आप पूरा उसका रिसर्च करते हो, ऑनलाइन देखते हो, लोगों से पूछते हो परफॉर्मेंस क्या है, बैटरी क्या है, और शेयर्स लेने के लिए भैया ने बोल दिया आप शेयर्स ले लेते हो। वो छोड़ के उसको सीरियस बिजनेस समझो, तो मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज पर योर परसेप्शन। खुद की रिसर्च करें और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। तो पिछले 6 महीनों में मार्केट वाइड करेक्शन देखने को मिली है, जिसमें कई इंडिसेस डबल डिजिट से गिरे हैं। यह समझना जरूरी है कि मार्केट करेक्शंस नॉर्मल होते हैं और इन्हीं पीरियड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सेंसेक्स की पूरी जर्नी भी यही दिखाती है कि पेशेंस और डिसिप्लिन से ही रियल वेल्थ क्रिएट होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है या और गिरावट देखने को मिलेगी? अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करिए।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep growing. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.